इजराइल पर हमास के आतंकियों ने जमकर कहर बरपाया है। हमास का दावा है कि उसने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे हैं। इस आतंकी हमले की वजह से पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। इजराइल के एक स्वास्थ्य अधिकारी के बयान के मुताबिक अभी तक इस हमले में 150 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई है। 1000 से ज्यादा घायल है। इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है और इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का समर्थन किया है। Good afternoon. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities. When I got up this morning, started this at 7:30, 8 o'clock, my calls. Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians. In the street, in their homes, innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar. It's unconscionable. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people, full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of Jordan, spoken with members of Congress, directed my national security team to engage with their Israeli counterparts, military to military, intelligence to intelligence, diplomat to diplomat, to make sure Israel has what it needs. I've also directed my team to remain in constant contact with leaders throughout the region, including Egypt, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, the UAE, as well as our European partners and the Palestinian Authority. It's also a terrible tragedy on a human level. It's hurting innocent people. Seeing the lives that have been broken by this, the families torn apart, it's heartbreaking. And Jill and I are praying for those families who've been impacted by this violence. We grieve with those who've lost their loved ones, lost a piece of their soul. We have hope for swift recovery for many who have been wounded. But we're going to remain in close touch with Prime Minister. I personally am going to remain in close contact with Prime Minister Netanyahu as this situation continues to develop. And let there be no mistake, the United States stands with the state of Israel, just as we have from the moment the United States became the first nation to recognize Israel 11 minutes after its founding 75 years ago. Thank you very much. संकट के इस समय में इजराइल को अमेरिका समेत तमाम देशों का साथ मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो इजराइल की मदद के लिए ट्वीट भी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की मदद के लिए अपना बयान भी दिया है। उन्होंने कहा, आज मैंने इजराइल में भयावह हमास आतंकवादी हमलों के बारे में इजराइल के पीएम से बात की। मैंने उन्हें अपना समर्थन दिया और इजराइल की सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया है। जिल बाइडेन और मैं उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। इजराइल में शनिवार सुबह 6:25 तक सब कुछ सामान्य नजर आता था, लेकिन अचानक इजराइल के हवा में बारूद और काला धुआं दिखाई देने लगा। दरअसल फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे, जिससे पूरे इजराइल में अफरा तफरी मच गई और इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हमले में 100 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। हालांकि मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।